Avalon height, that other side, 26 sector. So Avalon heights, how many schools are there? 9 standard. How many divisions? 3 ABC. And 10 standard, 3. सब 3 3. आपका gold press में कितने हैं? 3 division. Which topic you have started? First chapter, language of chemistry ना. चलो आज language of chemistry शुरू करें. ठीक है ना? Language of chemistry. This we have started. Yeah. What is chemistry, first of all? Chemistry means study of. Yeah. Textbook है क्या देखो? 9 का textbook, ICSE का textbook है. बोलिए. Study of matter. When I say study of matter means what? Like suppose I am studying about this particular dust. So what we are studying about this duster. Duster is matter. Okay. What I am studying is color. It's what is made up of. It's made up of wood, na? Carbon. Then it is actually what color हो गया. Then it is soluble in water. Right now? What is its melting point, boiling point, density, is the magnetic problem. Does it becomes a good conductor, no or less, or it is an insulator? These are all physical properties of it. Likewise, I take one piece and start reacting with air. So, this particular substance, when you react with air, क्या मिल रहा है? What I am getting? Then reacting with, I react with water. I react with water. I react with acids. I react with base. What I get? I am trying to study that. So this is chemical properties. Either like chemical properties are. The study of chemical and physical properties of a substance, and this is physical. Yes or not? क्या नाम है आपका? वीर. हाँ, नाम नहीं पूछा. वीर. और आपका नाम क्या है? कृष. VIR है. ओ अच्छा वीर. और आपका कृषवी. कृष्य KRISHIV. ओ कृष्य. ओके. कृष्णा और शिव का एक कॉम्बिनेशन, isn't it? चलो ठीक है. Chemical properties, and also not only that, okay, physical and chemical properties get together. We are going to see the uses of this. इसका use क्या है सोसाइटी? Is used for rubbing the food. Right now, it is a non-conductor. That means whenever you are using touching any electrical switch, you can stand on this particular wooden piece and actually what do the electrical work. Of course, you have to switch on of that particular connection. But sometimes because of some current flow or some kind of anomaly, the current should not pass through the earth, right now. इसलिए आप wooden चप्पल पहन सकते हैं, प्लास्टिक चप्पल पहन सकते हैं. Because plastic is a non-conductor. So वो जब तुमको ये इसका properties you know, then only you can use it, na? Then you say, I will use. Are you going to use metal while doing some electrical connection? No, because you know very well they are conductors. This substance is insulator, does not conduct electricity.
Because every matter, when you're talking about, okay, about physical and chemical properties, every matter is made up of what? Small, small particles. Okay, like for example, you take a big piece of stone and you start, breaking it. It becomes smaller and smaller. You start further break it becomes still smaller. You further break it becomes still smaller. And a time comes that when you try to break, it doesn't break further and it becomes invisible. Then that particular matter, then those particles which are invisible, which are indivisible, are called as what? Atoms. Or we can say molecules. So any smallest particle of matter which cannot be further divided except molecules. Molecules can be divided, but atoms cannot be, which are indivisible, we can say, okay, or which are very small, and they are responsible for all the properties of this matter. Then that is called as what? Atom. Or that is called as an atom of an element. So study of element, and not only element and also compounds, is nothing but chemistry. Okay. Now, earlier scientists, what they were doing, they were trying to write the names of the elements. Like, for example, that time the very few elements were discovered, and they were called as what? This is sulfur was there, phosphorus was there. Okay, phosphorus. Then we can say, for example, copper was there. Yes or no? Gold was there. Gold. मालूम है आपको? Copper, silver. सोने चांदी का अशरफी मालूम है आपको? आयरन was an element. अर्थ क्या है? आयरन रॉड अंदर है. This will be having north pole and south pole का magnetic needle standing across north and south facing. Anyway, these some elements were actually present. Now, when we were actually wanted to study chemistry, okay, these were actually what names given. To a man called John Dalton, he gave a picture symbol for various elements. Hydrogen was another element. Oxygen, ऐसे 7-8 elements were present. Okay. So Dalton, what he said, like for example, when you were actually in first standard, how that particular A was shown. First teacher dropped actually what gave that. She brought one apple. Then she said that A for apple. She showed that picture symbol, or literally brought one apple from house to indicate that look, this is apple. And it starts with letter A, so A for apple. So likewise here, John Dalton, he said every atom is in the form of sphere. ठीक है कि नहीं? तो अगर आपको for example, let us say you want to actually represent this particular oxygen or maybe hydrogen, ठीक है ना? हाइड्रोजन को आपको क्या करना पड़ेगा? एक बीच में डॉट डालना पड़ेगा सर्कल के बीच में. ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है. या सर्कल के बीच में डॉट नहीं है तो ऑक्सीजन. या डॉट इधर डालेंगे और इधर नहीं डालेंगे तो ये क्या ऑक्सीजन हो गया और ये हाइड्रोजन. जस्ट एन एग्जांपल. एंड देन वन पर्टिकुलर अगर एस लिखा है तो सल्फर है, पी लिखा है तो फॉस्फोरस है. These are called as what? But then many elements were discovered later on. So what scientists have done, this will way out and how to remember when it is dot, when it is not dot. Okay. So what they said that we are going to actually what? For example, write the name of the elements in the form of what? Symbol. Symbol is a short form of an element. Just for example, you are traveling by a car, suppose. कार में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप पीछे बैठे आगे पर्सन ड्राइव कर रहे हैं,
और यहाँ पे एक अपना इंडिकेटर है, यहाँ पे लिखा है like some people are driving the car, okay, और ये कार के यहाँ पे एक वर्ड आया है. Now person who's driving the car is eyesight gets directed to this. He starts reading that, or as the car is moving, he's reading also. And here there is a big stone. What will happen? He will dash against the stone and damage the car, and maybe damage himself also. अभी इसमें क्या किसके गलती है? इनका भी गलती है, इधर ये भी गलती है. क्यों? Because it is full word he has to read. So what we do? We write the short form parking. That's why you find that. And then somebody wants to, the traffic people, they say no parking, cross the. Or there is no word over here. Strictly no parking. तो बड़ा फाइन इधर है. ये क्यों ऐसा शॉर्ट फॉर्म में बता रहे? Because driver is not supposed to read the whole word, yes or no? Otherwise he will meet with an accident. Split, for example, decision, movement of your eyes, and this and think of that. Suppose there's let us say speed breaker, not a stone. The car will bump up. It may hurt some people. For example, when they go up. Remember? So scientists started, okay, this particular picture symbol की जगह पे symbol short form of an element. So they started and they said hydrogen when I write. Then we write this first letter H. Helium He. Lithium Li. Beryllium Be. Li. He और ये बोरॉन का ब. देखो यहाँ और ये डिफरेंस है कि नहीं? कार्बन सी क. then nitrogen and oxygen O. जो लेटर से स्टार्ट हो रहा है उससे. The next one is what? Fluorine. F. Simple. Look at neon. Ni. N nitrogen तो है ना? You cannot write N. Then neon के बाद next element is what? Sodium or some elements. Their names have come derived from the Latin name. Sodium has come from the word. This is a new name. We write natrium. Now. Magnesium, mag. इधर है. जी. क्योंकि ए साइलेंट हो गया है. मां नहीं मैग्नीशियम. ठीक है कि नहीं? मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम. अल कबीर अली बाबा याद अल एल्यूमिनियम. सिलिकॉन. फॉस्फोरस. फॉस्फोरस का क्या है? पी. सल्फर. What is the symbol? S. Then chlorine. Chlorine का क्ल. X I. तीसरा लेटर L लेने का. तो कार्बन का C तो है ना? You cannot write C. Chlorine क्ल. फिर इसके बाद क्या है? नियॉन. सॉरी आर्गन. आर्गन का क्या होगा? AR. उसके बाद क्या है? argon के बाद next one is what? After argon
लेट्स से फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, दिया, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये क्या बोलते हैं, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, या ओके। देन हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, ना पोटेशियम एस, दिस इज अ न्यू नेम, इसका नाम क्या है, ओल्ड नेम क्या था, कैलियम के, इतना लिख लो, देन विल फर्दर गो, ठीक है। Which book you are referring? ओल्ड प्रेस में कौन सा टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हैं? सेलिना है आपके पास, सेलिना? ओह, स्टॉक में नहीं है आपका, सेलिना है आपका? बस सेलिना, दोनों का सेलिना, गलती की होगी। इधर आ जाओ, इसके साथ बैठ के, या उधर चले जाओ। पेन नहीं है तुम्हारे पास, देखो पेन तुम्हारे पास है? चलो दे दो उसको, गुड, मिल गया तो। गोल्ड प्रेस का टाइम क्या है? तुम लोग का ये कैंप भी चालू हो गया ना, समर मॉर्निंग में जो स्पोर्ट्स प्लेयर आते हैं, कितने बजे आए लोग? तो जल्दी आए, 6:30 आए। यूर स्पोर्ट्स कौन सा? यू हैव नाइट्स, कहाँ पे आपका वो क्या बोलते हैं, ग्राउंड, प्लेग्राउंड कहाँ पे है? उधर ही। तो तुम लोग स्पोर्ट्स ज्वाइन किए इधर, कौन सा स्पोर्ट्स?
Attendance दे दो. ये This baby. Okay. कर लिया आपने. लिख लिए. ये लिखो आराम. ये सारा किधर है? अच्छा खाली मैथ्स के. तो साइन करके दे दो सबको. Okay. Now let's come to other elements also. Now some Latin names which are there, plus और भी नाम है हम लोग देखेंगे. अभी सब लिखना तो नाम लिख दिए, अभी और भी नाम लिखना बाकी है. ओके. क्यूप्रम ये कॉपर का है. ये और इसका सिंबल क्या है? C. Then argentum. This has come from the word. It is its new name is silver. Argent. तो A और G इस पे स्ट्रेस दी.
Okay, R नहीं, argon का तो already AR है. Okay, gold का actually पूरा नाम aurum. बाजू में कंस्ट्रक्शन कंपनी है aurum, ये लिखा है aurum, देखो अगर औरस, इसका गोल्ड का इसका लैटिन AU, हाइड्रोजाइरम, H, hydrogen, G. This has come from the word, I mean, the new name is mercury. ठीक है, बेरियम, अब ये तो लैटिन नेम इसका नहीं है, बट ये जस्ट बेरियम, बी, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, यस, ठीक है, देन जर्मेनियम is semi-metal, metalloid, Ge, gallium, zinc, zinc में देखो zinc, N पे ज्यादा स्ट्रेस, zinc, N, okay, cadmium, CD, cadmium, का नहीं है cadmium, Ca तो हो गया कैल्शियम, इसलिए cadmium, कड तो D आता है, जहाँ पे स्ट्रेस आता है उसका स्पेलिंग है, उसका लेटर है, ठीक है ना, D आता है, ठीक है. Now these are the elements which are actually the most basic substances which cannot be broken down into further elements. So they are most basic. which is most basic उसको और क्या break करेंगे, ठीक है. अब इसमें आते हैं next part and that is nothing but what? For example, the valency of an element. What is valency? Valency is basically a combining capacity of an element. ठीक है. What is combining capacity? When an element like helium, neon, argon, इन लोग क्यों नहीं combine करते? Because these elements are having what? Krypton, xenon, and radon. They are having one unique thing. They have 8 electrons in the outermost shell. So whenever an element is having 8 electrons in the outermost shell, it does not participate in the chemical reaction. Likewise, helium तो बोलने से helium के लिए तो stable है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है. साइंटिस्ट का कहना है कि जब एक एटम में outermost shell में या first shell itself is actually outermost shell और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, then atom is stable. It will not participate in the reaction. Likewise, an atom which is having, for example, like neon, has got 2 electrons in the first shell and 8 electrons in the second shell. Then that atom में outermost shell में कितने electrons are stable. So what about those elements which are not having 8 electrons? They would like to acquire 8 electrons. That means they would like to combine. This combining capacity of an element okay, when they combine with element like hydrogen and oxygen. So with number of hydrogen atoms with an element combined, number of hydrogen atoms with which an element combined, number of hydrogen atom with one atom of that element like carbon combined with 4 hydrogen atom, तो कार्बन का वैलेंसी क्या होगा? 4 हाइड्रोजन से, ठीक है. यहाँ पे ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होगा? 2 हाइड्रोजन से कंबाइन किया तो ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होगा? 2. Right? So number of hydrogen atoms with which an element, one atom of an element combines will be called as what? ठीक है? Okay? अब हम लोग आते हैं what is important over here? That means at the same time valency is also what? Valency
ऐसा भी है, वैलेंसी इज एक्चुअली व्हाट, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, which combine with one atom of an element. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इज 2 हो गया, राइट ना। अब क्लोरीन कंबाइन कर रहे हैं 7 ऑक्सीजन से, इसको आगे देखेंगे हम लोग, अलग लेते हैं इसको। अब इसको देखो, इसको हम लोग अलग तरीके से देखें। अब इसमें और देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ क्लोरीन एटम विद व्हिच एन एलिमेंट, वन एटम an element combines, like hydrogen combined with only one chlorine atom, so valency of hydrogen is what, 1. तो valency of hydrogen को क्यों, एक ही क्लोरीन के साथ कंबाइन। magnesium combined with 2 chlorine atoms, just like hydrogen chlorine ले लो, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कंबाइनिंग विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कंबाइनिंग, इधर से क्या था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंबाइनिंग। यहाँ पे देखो क्लोरीन, दो क्लोरीन एक मैग्नीशियम, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम 2। व्हाट अबाउट दिस, एक एल्युमिनियम 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना, 3, तो 3 क्लोरीन कंबाइन कर रहे हैं। एक सिलिकॉन 4 क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है, एक फास्फोरस 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है, वैलेंसी 3 है। So whenever valency of an element is 1, it is called as what type of element? Monovalent element. Mono means what? 1. Di means what? 2. Sir, di. Di means 2. Tri means what? Tricycle आपने नाम सुना होगा, बाइसाइकिल या डाइसाइकिल, डाइ तो नहीं बोलते उधर, बाइसाइकिल बोलते हैं। बाई मींस 2, डाइ आल्सो मींस 2, ठीक है। ये ट्राई, दैट इज ट्राइवैलेंट, ये क्या हो जाएगा, 4, टेट्रावैलेंट, टेट्रा मींस 4, फिर पेंटावैलेंट, ऐसा करके भी लिख सकते हैं, बट okay, but valency is basically, what is the meaning of valency? Valency is nothing but a chemical reaction. So valency is nothing but number of electrons, because what is the meaning of a chemical reaction? अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो दे रहा नहीं है ना ले रहा है, बट अगर सपोज इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो it will try to gain some electrons so that it will actually not acquire 8 electrons, or it will lose, for example, some electrons so that its first shell will be having what, how many electrons, 2 electrons, so that stable हो जाएगा। That means elements which are not actually inert, they will try to either, okay, number of electrons को lose करेंगे और gain करेंगे और share करेंगे so that they can have 8 electrons in the outer motion. Like sodium का, if you see for example, sodium has got electronic configuration 281, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में, 1। तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम। So since it loses 1 electron, so valency of sodium is what, 1. That is, what is valency? Number of electrons donated, और इसने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 1, तो वैलेंसी 1। क्लोरीन, तो ये इधर गया इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन के पास गया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन दी। Should call that. 1 chlorine will gain 1 electron, becoming what, Cl minus। क्यों, तो यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रॉन चला गया है, किसके पास गया है, क्लोरीन। जैसे अभी क्या किया है वीर ने ना, एक पेन दिया किसको,
रिसीव को दिया, इसने एक पेन लूज हो गया, इसने गेन किया, यस और नो? उससे दोनों स्टेबल हो गए। कैसे? उसने दे के वो खुश हो गया और ये लेके, दोनों का काम चल रहा है। क्लोरीन, सोडियम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन गेन्स वन इलेक्ट्रॉन। क्यों इसने गेन किया? बिकॉज़ उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने। और इसको क्यों लूज किया? इसने क्यों लूज किया? बिकॉज़ जब तक लूज नहीं करेगा तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो इसका वैलेंसी 1 है, इसका भी वैलेंसी 1, दोनों ने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया और दिया। लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 1, gaining 1 electron, valency 1, likewise sharing 1 electron, valency 1, but इसमें sharing नहीं। There are 3 ways to participate in a chemical reaction: losing, gaining and sharing. इसको बोलते हैं valence। Now whenever an element loses, और जो lose करता है उसके ऊपर positive charge है। Why? Because it has lost the electron. Electrons are what charge? Negative charge। इसने गेन किया, उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। सर मुझे तो एक रुपया लोन देना पड़ेगा, बिकॉज ये पेन मैंने जो लिया वो तो मेरे ऊपर एक अपना क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मुझे उसको। आई एम इंडेप्टेड टू मिस्टर वीर, क्योंकि लेक्चर के बाद मुझे वापस देना है। आई एम नेगेटिव लोडेड विद दैट पर्टिकुलर लेट अस से ऑब्लिगेशन इन अ वे। जस्ट फ्रेंडशिप तो सब चलता है। बोले सर लेकिन मुझे तो देना पड़ेगा, इसका तो लूज किया, उसको तो देना नहीं है, उसको तो उल्टा देना है, उसके ऊपर ज्यादा हेडेक नहीं है, उनके ऊपर हेडेक है जो नेगेटिव लेके बैठे हैं। तो नेगेटिव मींस वो नेगेटिव में चल रहे हैं, जो देने के बाद वो पॉजिटिव में चलेगा, क्योंकि सर उसको तो वापस देना नहीं है। दैट मींस द वन व्हिच लूजेस will have positive charge, that is called cation. The one which is getting the electron called anion. Yeah. Anion is negatively charged and cation is positive. And these ions are called as what? Charge atoms. क्या बोलते हैं इसको? ये भी एटम है लेकिन चार्ज। सोडियम क्या है? क्लोरीन क्या है? न्यूट्रल एटम। बट क्लोराइड क्या है? एनायन। सोडियम क्या है? न्यूट्रल एटम। किधर सोडियम? ये देखो। और अगर इसके ऊपर चार्ज डाल दिया है तो आयन बन गया। चार्ज एटम which is called as an ion. Common last three letters क्या है दोनों में? Ion. So what are ions? Ions are charge atoms. What are charge atoms? They are the atoms which are having charges by loss or gain of electrons. ठीक है ना? अभी कोई बोलेगा सर राइट ऑफ द नेम ऑफ सोडियम आयन, तो आपको मालूम होना चाहिए सोडियम आयन का वैलेंसी क्या है? Na+। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज कर रहा है? क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 282 है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्यों छोड़ रहा है वो 3 इलेक्ट्रॉन? बिकॉज़ उसको मालूम है कि 283 है, जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन ऑन द अदर हैंड will gain 1 electron, become chloride ion. ये chloride ion है। Bromine will gain 1 electron, bromide ion. Iodide will gain 1 electron. They are gainers, they are losers. But इसके ऊपर जो चार्ज है वही वैलेंसी है। What is the valency of sodium? 1. Magnesium 2. Aluminium 3. That means it has lost 3, 2 and 1 respectively. Here they have gained 1, 1, 1. Right? Carbonate. Now you will say, sir, what is carbonate? This is a compound radical. Group of radicals, group of atoms together. Carbonate है negative, ये compound radical. Compound radical में दो से एक से ज्यादा एलिमेंट है ना compound. Nitrate ऐसे लिखते हैं NO3। नॉर्मली ये मेटल आयन में एक ही आयन रहता है, बट नेगेटिव आयन में कंपाउंड आयन रहता है। ये कंपाउंड रेडिकल है। ठीक है, पहले इतना लिख लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखो आराम से। आ रहे हैं ना तुम लोग? पहले एटम फिर आयन। ठीक है, पहले वो लिख लो अपना नाम, तो एलिमेंट्स क्या है।
टाइम इज अप ऋषभ, टाइम खत्म हो गया। चलो अच्छा लगा तुम लोग से फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन करके, बिकॉज योर अटेंटिवनेस इज वेरी हाई, गुड। मुझे इसलिए मुझे अच्छा और भी पढ़ाने का ये मन कर रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, पूरा रिस्पॉन्स दे रहे। ओके, नेक्स्ट टाइम हम लोग ये आगे बढ़ेंगे। अभी तक खत्म नहीं हो बैलेंस, अभी आगे रहेगा, बिकॉज इसमें बहुत कम आयन दिया है, पूरा टेबल है उसमें। ठीक है, तो तुम लोगों को क्या करना है, टेस्ट रहेगा नेक्स्ट टाइम, सिंबल्स ऑफ दिस एलिमेंट्स टेक्स्ट बुक से आपको लर्न करना है। हाँ, एक 15-20 में सिंबल्स नेम बोलूंगा और आपको उसको लिखना है, बिकॉज ये बहुत फाउंडेशन, जस्ट लाइक फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग विल बी स्ट्रांग व्हेन द फाउंडेशन इज स्ट्रांग। वैसे ठीक है चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी। नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिख लो जितना भी हो रहा है, ये बैलेंस से ये कॉन्सेप्ट अभी आएगा, इसको मत लिखो, ये अभी आ जाएगा। इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन, बिकॉज़ दिस वी हैव डन बट नॉट कंप्लीटली। ठीक है, बस फर्स्ट लेक्चर में ना जल्दी फास्ट नहीं कर सकते, वी हैव टू बी स्लो कंपेरेटिव। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, इसके बाद लास्ट लेक्चर है ना तुम्हारा, मैथ्स लेक्चर। थोड़ा आराम करो, पानी में पियो। ओके, देन आगे बढ़ो। 19 से 2 ही बच्चे अटेंडेंस शीट जब 5 बच्चे लिखे ना That's it.